Now students, we will discuss your chapter 4. Chapter 4 is quadratic equation. After chapter 2, we will revise the chapter 4. Chapter 4 क्या आपका quadratic equation. So first of all, what is the standard form of the quadratic equation? Standard form. So what is the standard form of the quadratic equation? And anyone can tell to me the basic difference between a quadratic equation and a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ आई राइट f of x equals to ax square plus bx plus c, and if I write ax square plus bx plus c equals to 0, then first one is the quadratic polynomial and second one is the quadratic equation. So if in quadratic polynomial we will put equals to 0, then that become the quadratic equation. So what is the standard form of the quadratic equation? Ax square plus bx plus c, where a, b, c are real number. For example, 2x square plus 3x plus 4 equals to 0. So that is the quadratic equation or not? That is the quadratic equation. So what is the value of a? A value 2, b value 3 and c value is 4. a क्या बनेगा आपका? 2 बनेगा, b क्या बनेगा? 3 बनेगा और c क्या बनेगा आपका? और 4 बनेगा. Next, after that, if one more example, 2x square minus 4 equals to 0. So given equation is a quadratic equation. 2x square minus 4 is equals to 0. Students, given equation is a quadratic equation. Yes, sir. Because quadratic के लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 2. So here highest power is 2 or not? Highest power 2 है. That's why given equation is a quadratic equation, not polynomial equation. Now next we will check one more. X cube plus 3x plus 1 is equals to x minus 1 whole cube is a quadratic equation or not? So students, how we will check? So that given equation is a quadratic equation. Power 3 है, so without solving आप क्या बताओगे? क्यूबिक है ना ये तो? No. Firstly we will simplify, then after we will say x cube plus 3x plus 1. Here we will use the identity a minus b whole cube. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. ये होता है फॉर्म. So x cube minus 1 minus 3 into x square into 1 plus 3 into x into 1 square. X cube cancel. 3x plus 1 equal minus 1 minus 3x square plus 3x. Again 3x cancel. Complete transfer left hand side. 3x square plus 1 equals to 0. 3x square plus 2 is equals to 0. So 3x square plus 2 is equals to 0. That in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 or not? तो इसको इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हो. 3x square plus 0 dot x plus 2 equals to 0. So that is a quadratic equation. Okay, so if any expression is given to you, then without solving you can't tell that the equation is quadratic or not. Firstly you will simplify, then after you will solve. Now next, how we will convert the word problem into the quadratic equation. आपको वर्ड प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चैप्टर थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट चैप्टर फोर्थ में ओनली सिंगल वेरिएबल में आप कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन वी विल कंसिडर sum of two number is 15 and their product is 90. Sum of two number is 15 and their product is 90. Then form a quadratic equation. Then form a quadratic equation. So how we will find out the quadratic equation, student? First of all, here two number sum 15. Let first number be x, then what is the second number? 15 minus x. Suppose two friends are having 100 rupees. First friend have the 20 rupees, then second friend have the 80 rupees or not? So what procedure we do here? Subtraction. So let first number be x, then second number is क्या बनेगा? 15 minus x. We will not form the equation in two variable, we form only one variable. Now according to question, their product is x multiply 15 minus x is equals to 90. Their product become 90, so x multiply करो, 15x minus x square is equals to 90. Right hand side, x square minus 15x plus 90 is equals to 0. So that is the quadratic equation. Okay, some part of your chapter fourth, how will convert word problem into quadratic equation as removing. Okay, कुछ पार्ट क्या किया है इसमें? रिमूव किया. Yes. Sir, that one question in 4.1 last question. Yes, डिस्कस कर रहे हैं बेटा. Now next देखो 4.1 question number last. Yes, that is very important question and based on train one. Question based on train. Question based on train. So question based on train, here the speed of one train is given to you and speed of second train is not given to you. Then how we will determine then which train will takes the more time and which train will require the less time. Suppose two train are given to you. First train speed is x, then second case the train speed is a decrease. सो ट्रेन की स्पीड डिक्रीज होती है, सो रिक्वायर्ड टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो ट्रेन विल रिक्वायर द मोर टाइम. एंड इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीजिंग देन द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रेन इज लेस. स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा. स्पीड डिक्रीज होगी सो टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके, नाउ विल डिस्कस दैट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर of fourth. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. So first of all, here total distance is equals to 480 km. After that, if the speed had been 8 km per hour less, so here speed is unknown, that is uniform. So let the uniform speed of train be
x kilometer per hour. So when the speed of the train is x kilometer per hour, then required time, then required time t1 is equals to 480 upon x. We know that टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हियर, if the speed had been 8 kilometer per hour less, so if speed had been 8 kilometer per hour less, then न्यू स्पीड क्या बनेगी, x माइनस 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, न्यू स्पीड बिकम द x माइनस 18, 8 है सो इसको 8 कर लो, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम t2 इन दैट केस, टाइम t2 480 अपॉन x माइनस 8. After that it would take 3 hour more. Here speed is x, here speed is x minus 8. So in which condition the train will require the more time? In T2 में क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, so will require more time. अब इसको more time यूज हो रहा है, इसको less time यूज हो रहा है. So how we will equate the equation? इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning? T1 plus 3r. T2, right? Now according to question, T2 is equals to T1 plus 3 because ट्रेन T2 को ऑलरेडी मोर टाइम रिक्वायर्ड है. और इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, बैलेंसिंग कंडीशन. सो T1 को लेस टाइम रिक्वायर्ड है, तो लेस स्मॉलर क्वांटिटी है, सो इस स्मॉलर क्वांटिटी में कुछ ऐड करोगे तभी तो वो ग्रेटर लार्जर क्वांटिटी के इक्वल होगी. सो T2 क्या है आपका 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3. नाउ ट्रांसफर राइट हैंड साइड, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x is equals to 3, right? Now after you will take the LCM, then simplify, then you will make the quadratic equation. अब इसकी हेल्प से क्या बनाओगे आप, quadratic equations फॉर्म करोगे. Then how we will make the quadratic equation? LCM x minus 8 into x minus 8 cancel, 480 x cancel, 480 x minus 8 is equals to 3. Simplify, 480x minus 480x, negative positive, 480 multiply 8 is equals to 3 x square minus 8x cancel. So 3 480 into 8 divide 3 is equals to x square minus 8x, 3 160. Then multiply, then we will get a quadratic equation. Understand? And if students in that question given to you, if speed had been 8 किलोमीटर पर आवर मोर, देन T2 क्या है आपका 480 अपॉन x प्लस 8. देन व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या फॉर्म होती, इक्वेशन T2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू T1. बिकॉज हियर स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज हो रही है, सो रिक्वायर्ड टाइम इज लेस. तो रिक्वायर्ड टाइम होगा आपका वो क्या होगा, लेस होगा. सो कंडीशन क्या बनेगी, 480 अपॉन x प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x. देन दैट ट्रांसफर राइट हैंड साइड, देन 480 अपॉन x माइनस
480 अपॉन x प्लस 8 इक्वल्स टू, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? बैलेंसिंग कंडीशन। और बैलेंसिंग कंडीशन का मीन क्या है? यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी है वो वन साइड आएगी, तो स्मॉलर क्वांटिटी है उसमें आप कुछ ऐड करोगे, देन दैट बिकम टू इक्वल्स टू द लार्जर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम। सो एजेस के लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था क्लास में। इफ सम वर्ड्स लाइक दैट गिवन टू यू नाउ, अगो, देन, टेम्स, दैट ऑल गिवन टू यू, देन we'll use either plus, minus, multiply that. Before that, if given to you first 3 or first 2 even consecutive number. So what are the first 2 even consecutive number? X comma x plus 2. First 2 odd consecutive number. So first 2 odd consecutive number x plus 1 and x plus 3. Next, first 2 consecutive number. So first 2 consecutive number is x and x plus 1. अब इन पे भी इस क्वेश्चन क्या होगा? If the product of first 2 even consecutive number is 15. So even consecutive number क्या है? x comma x plus 2. So x multiply bracket x plus 2 is equals to 15. X square plus 2x minus 15 is equals to 0. So first 2 even consecutive number x and x plus 2. First 2 odd consecutive number x plus 1, x plus 3. First 2 consecutive number x and x plus 1. Okay. Yes, any problem? Yes? Last two consecutive numbers. Last? No. नो लास्ट 2 किसके लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसके फॉर्म होंगे? लास्ट 2 आप कुछ तो उसमें देखोगे ना, ये कि स्टार्टिंग के 50 है तो उनके लास्ट 2 है, या स्टार्टिंग के 100 है तो उसके लास्ट 50 है, या स्टार्टिंग के 20 है तो उसके लास्ट 2 है। ये थोड़ा ना क्वेश्चन के लास्ट 2 किसके लास्ट 2 होंगे। ओके, तो उसमें पहले प्री डिफाइन होगा। सपोज द टोटल नंबर्स आर 100, देन लास्ट 2, सो लास्ट 2 क्या बनेगा? x प्लस 99 बनेगा और x प्लस 98 बनेगा। So there are predefined that the total number of terms. Next, if some words are given to like ago, so ago meaning minus, before also minus, after plus, hence plus, now plus, increasing plus or decreasing minus. So these all symbols will use in the word problem of solving the question related to the age problem. देखो age problem का क्वेश्चन देखो, age problem question is Rohan's mother is is 26 years older than him. The product of their ages 3 years
from now will be 360. Then form a quadratic equation. So students, how will form? Here we don't know what is the present age of Rohan and what is the present age of his mother. So let present age of Rohan be x years. Then present age of his mother is 26 plus x. Now read question. The product of their ages 3 years from now. So 3 years from now. 3 years from now. What is the age of the Rohan? X plus 3. What is the age of the Rohan's mother? 26 plus x plus 3 become the 360. Now आ रहा है तो क्या यूज करोगे? पॉजिटिव. So x plus 3, then 29 plus x is equals to 360. Now you will do product, then you will get the quadratic equation. Understand, students? So today you completed your chapter 2nd and you start chapter 4. In next lecture we will continue with chapter 4, that is how the solution of the quadratic equation, how we will finding out the solution of the quadratic equation, and how we will finding out the nature of the quadratic equation. Nature meaning real roots are present or different roots are present. That we will discuss in next class. Okay.